So hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class we are going to discuss about important ministers and ministries. So basically if you see the previous year questions of CLAT or any other exam, specifically of CLAT also, we have seen in recent years questions being asked from ministries or ministers. Let's say who is the Minister of Health and Family Welfare, like that. Or they have asked questions about which two ministries merge to form a particular ministry, or things associated with that actually were asked in recent years. And different exams do ask this question. ठीक है कि ministers के बारे में या council of ministers, how it functions, and when do they have majority, how they lose majority or no confidence motion. So these are the things actually that we will be discussing it in today's class. So if I'm audible and visible, and if everything is fine, please write yes in the comments so that we can begin our class. Is my voice clear? Is everything fine? If yes, then please write yes in the comments so that we will start our class. Yes. Good evening, guys. Good evening. Good evening, Priyanshi Goel. Natasha, good evening. Okay. So basically, जिसको हम लोग important ministries and ministers will be discussing about council of ministers, जिसको हम लोग हिंदी में मंत्री परिषद कहते हैं ना. So specifically, we will be focusing on central government, of course, because I cannot discuss about each and every state government that who are the ministers and all. We'll be, of course, focusing on the central government. So let us begin with the questions. I'll discuss some few questions in the beginning. Then after, I will discuss all the minister and the names. So the Council of Ministers shall be collectively responsible to whom? So this, your options are the Council of States, House of the People, the Parliament, or the President. And this is according to the Constitution. Okay, let me see how many of you can answer. The Council of Ministers, yani Mantri Parishad, total ministers, है ना, shall be collectively responsible. The word is collectively responsible to whom? So I have got one right answer. Natasha is right. Yes. So the answer is the House of People. So what is House of People called in Hindi or in local terms? House of People किसको कहते हैं? And I will explain. It is not C, but it is B. That also I will explain. But first, please tell me what is option A. Council of States किसको कहते हैं? House of People किसको कहते हैं? Please tell me. हाँ, लोक सभा, right? Yes, Priyanshi, Natasha, Harshnoor, you're right. हाँ. Yes, Tejasvi, right? हाँ. Actually क्या होता है? Council of States is राज्य सभा. I hope you are aware. ठीक है? House of People is Lok Sabha. And what is Parliament? Yes. Parliament comprises of what? This is a very famous question. Parliament comprises of what? So there are three components of Parliament. What are those three components? Please tell me. Why I'm explaining, then only you will understand. So both the houses, yes, but you have given me two components. So there are two houses. Yes, Natasha, now you are right. One is Lok Sabha, another is Raj Sabha, and President of India. Okay. So these three components are of these are the three components of Parliament. Now, where it is written, ये वाली बात कहाँ लिखी हुई है? कि the Parliament comprises of Lok Sabha, Raj Sabha, and the President. Where it is written? Yes. Good evening, Kushagra. Welcome to the class. Please tell me where it is written that Parliament includes President of India also. Yes, it is written in the Constitution in Article 79. Yes. So मैंने देखा इस तरह क्वेश्चन आते हुए कि which of the following is not a part of Parliament, and one of the option is President, and people think the President is not part of Parliament, but Article 79 says so, and that is why you should know that Parliament of India comprises of two houses and the President of India. Yes, Ashnoor Kaur, very good. Okay. So I was talking about the Council of Ministers shall be collectively responsible to, और किसी ने C बताया और ये आंसर मैंने गलत बताया, and the answer is B. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर हम पार्लियामेंट बोलते तो तीनों हो जाता,
All the three. But the answer to this question actually is only House of People, in itself Lok Sabha. So the Council of Ministers is collectively responsible to only one component, actually, technically. Collectively. See the word? So collectively responsible only to the Lok Sabha, not to Raj Sabha and not to President, technically. Okay. Now, can anyone tell me why I am saying so? The Council of Ministers is only collectively responsible to Lok Sabha and not to Raj Sabha. क्यों, कोई बता सकता है? सिर्फ लोकसभा को कलेक्टिव, ये कॉन्सेप्ट है. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. इफ यू विल अंडरस्टैंड इट, यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. सिर्फ लोकसभा को ही कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राज्यसभा को नहीं होते हैं. कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, सब एक साथ मिलकर. व्हाई? कैन एनीवन टेल मी? ओके, अब हम घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं. If you want to have the prime minister, so the political, let's say there's a political party X who wants to have its own prime minister. So this political party needs majority in Lok Sabha or Raj Sabha or both. अगर आपको सरकार बनाना है, प्रधानमंत्री बनाना है, as it advises the president, no, that is not the answer. कुछ अगर no, decision making. अगर आपको गवर्नमेंट बनाना है, if you want to form the government, so in which, हाँ, even if a prime minister can be from Raj Sabha also, Priyanshi, like Mr. Manmohan Singh was a Raj Sabha MP from Assam, elected from Assam. So it is not compulsory that a prime minister should be from Lok Sabha, Lok Sabha MP. The answer is yes. Now you are answering it. Yes. If you want to have the government, you need majority only in Lok Sabha. Even if you do not have majority in Raj Sabha, it is fine. आपकी पार्टी की मेजॉरिटी होना चाहिए, चाहे अकेले चाहे अलायंस के साथ. Okay, that is why I have said, for example, last year elections happened and the result came, I think, if I'm not wrong, 4th June. है ना, 4th June को आया था ना रिजल्ट. So ये कौन सा इलेक्शन हुआ था जो लास्ट ईयर हुआ था? लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, where directly people go, direct elections, where people go and vote, and it happens every 5 years, 2019, then 2024. The Rajya Sabha election actually is, मैंने बताया हुआ था, elected MLAs go and vote. So the common people do not go for Rajya Sabha. So even if the government, if the BJP or the ruling government do not have majority, or the NDA together do not have majority in Rajya Sabha, चलेगा. But Lok Sabha में majority होना compulsory है. So Lok Sabha में how many seats are there? 543. And you have to cross the half mark. So if I am saying crossing the half mark, it means 543 divided by 2 is 271.5. So crossing the half mark means 272. कितना होना चाहिए? ठीक है? Is it clear? So although the BJP do not have individually 272 seats, it has 240 plus, but with the help of allied partner, it has crossed the majority. 272 सीट अकेले नहीं है इस बार, लेकिन allies के से help से 272 it they have crossed, and that is why they have their own government. Is it clear? Is it clear? Same is the case at state level. So state legislature जो होता है, so we have what we call it as legislative assembly, and we have legislative council. Okay, ये legislative council हर जगह नहीं होता, I think 6 states में सिर्फ. Legislative assembly is something like Lok Sabha, where you need majority to form chief minister, आपको CM बनाने के लिए. For example, जैसे दिल्ली में अभी, हालांकि दिल्ली is union territory, but okay, let's take the example of Delhi. ठीक है, तो legislative council तो नहीं होता है दिल्ली में, but Delhi has 70 seats. So if you want to make the chief minister, you should have 70 divided by 2 is 35. So you need 36 seats in legislative assembly. And the BJP has recently got more than 36 seats. And that is why they are forming their chief ministers. ठीक है? Is it clear? So similar is the case at state level is legislative assembly. So something similar is there at center level where there is Lok Sabha. Is it clear? Hopefully it is clear. तो यही बताना है कि यही सरकार बनती है और यही सरकार बिगड़ती भी है. So the government is formed here. The government falls here also if there is lack of majority, which is done through no confidence motion. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, I hope you are aware of no confidence motion. Have you heard this term? What is that? Because ये concept समझना जरूरी है.
concept of ministries, ministers, council of ministers. This concept is very important to understand. What is no confidence motion? For example, किसी की गवर्नमेंट है ना? So and let's say लोकसभा में ही पास हो गई है सिर्फ. So if no confidence, let's say opposition parties 50 opposition leaders है ना, ये लोग साइन करके देंगे स्पीकर को that please initiate a no confidence motion, and if this motion comes and if it is passed, सारे let's say MPs हैं 543 और सबने वोट कर दिया, 272 क्रॉस कर गया, the government will fall. So government को गिराया भी ऐसे ही जाता है. So the government is formed in Lok Sabha, the government falls in Lok Sabha, and then if the no confidence motion is passed, then of course the prime minister has to resign automatically and the new election will happen. Okay, is it clear? इसलिए council of ministers जो collectively, यानी council of ministers means prime minister and other ministers, ये आपको समझना जरूरी है. Is it clear? They are collectively responsible to Lok Sabha or House of People, because if they collectively do not get the confidence of Lok Sabha, then the government will fall, है ना? Or the government is formed here. Now the next question is the council of ministers shall be collectively responsible to the House of People. This statement is mentioned there. Article 71, 75, 93, 108. पता है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. आप किसी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, जितने भी स्टैंडर्ड एग्जाम्स होते हैं, सब में ही पूछा जाता है. और हाउस ऑफ पीपल की जगह लोकसभा लिखा होगा. ठीक है. Yes, what is the answer? This line, the council of ministers shall be collectively responsible to the House of People. This line is mentioned in Article 75, Clause 3. So B is the right answer. Natasha, Priyanshi, Goel, Kushagra, Saxena, you all are right. B is the right answer to this question. है ना? तो मैंने आपको बताया ये लोकसभा है, तो सिर्फ यहाँ मेजॉरिटी चाहिए होती है. You need majority here. So 543 divided by 2 है ना, तो 271.5, तो 272 चाहिए, यहाँ चाहिए सिर्फ. The government makes here, falls here. ये राज्यसभा है. Yeah, even if the BJP or the ruling party do not have majority, चलेगा. So the government can still work. ठीक है. So that is what you should know. Now, the next question is the Council of Ministers in a Mantri Parishad are appointed by Prime Minister, President, Chief Justice of India, Lok Sabha. अच्छा, तो मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ इंडिविजुअली. हाँ, नहीं तो आप समझोगे कि फिर वही कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी हर मंत्री को अपॉइंट कौन करता है? एवरी मिनिस्टर को. हु अपॉइंट्स ईच एंड एवरी मिनिस्टर्स? लेट मी सी, थिंक एंड आंसर. ये सब बहुत अच्छे स्टैंडर्ड, दीस आर स्टैंडर्ड क्वालिटी क्वेश्चंस एंड आई हैव गिवन ऑप्शंस व्हिच आर वेरी कंफ्यूजिंग. Deliberately सोच के बताओ. So the answer is the President of India on the advice of Prime Minister. But the answer is B. जैसे अभी हम लोगों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया. Who is the new chief election commissioner? Please tell me. अभी जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया उनका नाम क्या है? What is his name? Abhi, I think yesterday it was in the news, or today also, है ना? Mr. Please tell me, guys. New Chief Election Commissioner, Mr. Gyanesh Kumar. So who has appointed him? So President of India has appointed him on the recommendation of a select committee comprising of Prime Minister, Home Minister, and Leader of Opposition Lok Sabha. Appoint President ने किया है, लेकिन advice किसी और की थी. ठीक है. ओके. सिमिलरली आई हैव टोल्ड यू व्हेन मैंने कॉलेजियम की क्लास ली थी. दोस हु हैव नॉट टेकन द क्लास, प्लीज वॉच इट, ऑल अबाउट कॉलेजियम सिस्टम करके ऑन द सेम यूट्यूब चैनल. ठीक है, लाइव सेक्शन में जाना मिल जाएगा. इसमें मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जज इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. यस, ऑन द रिकमेंडेशन और ऑन द एडवाइस ऑफ अ कॉलेजियम. अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं. ठीक है, ऐसे याद रखना कि 95% और से 99% केसेस में जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट होते हैं प्रेसिडेंट करते हैं, लाइक यूपीएससी चेयरमैन, सीएजी, सुप्रीम कोर्ट जज. ठीक है, मेनी थिंग्स, प्राइम मिनिस्टर, इवन प्रेसिडेंट अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. एक और चीज मैंने बताया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब ही होता है प्राइम मिनिस्टर प्लस अदर मिनिस्टर्स. ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था, आई डिस्कस्ड इट. ठीक है.
So that is what you should know. देखो साफ लिखा आर्टिकल 75 is very important. The prime minister shall be appointed by the president. यानी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं. Okay, and other ministers shall also be appointed by the president on the advice of prime minister. राय एडवाइस जो है वो प्राइम मिनिस्टर देंगे कि इनको इनको मंत्री बनाइए, लेकिन बनाते प्रेसिडेंट है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. ये थिन लाइन है बट आपको समझना है. फिर 75 क्लॉज 3 वी हैड डिस्कस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पांसिबल, कलेक्टिवली टू द हाउस ऑफ पीपल, मतलब लोकसभा. तो नो कॉन्फिडेंस मोशन यही से आता है. इफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड, नो कॉन्फिडेंस मोशन ऐसे होता है कि देखो मैंने बताया सरकार जो बनती है लोकसभा में बनती है. So if the opposition wants to break the government, or opposition wants to ensure that the government should fall, so the opposition leaders will, the 50 opposition leaders will sign and give it to the speaker that we want to initiate no confidence motion. So then if the no confidence motion comes, so it is discussed and the voting is done. And if half of the people votes against the government or favors the no confidence motion, then the government will fall. वो कब होगा? जब हो सकता है कुछ अपने अलाइड पार्टनर उधर चले जाए, है ना, बिकॉज जनरली गवर्नमेंट हैज मेजॉरिटी है. गवर्नमेंट के पास 272 से ज्यादा सीट होती है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जनरली नहीं पास हो सकता है. बट इफ इमेजिन करो कि 240 ऑफ बीजेपी एंड देयर अदर अलाइड पार्टनर्स, दे आर नॉट हैप्पी एंड दे गो टू द कांग्रेस और अपोजिशन पार्टी एंड दे से कि वी वांट नो कॉन्फिडेंस मोशन, देन इन दैट केस द गवर्नमेंट विल फॉल. तो यही आपको समझना है कि सब कुछ यहाँ होता है. एवरीथिंग हैपेंस हियर इन लोकसभा, द गवर्नमेंट फॉल्स हियर, द गवर्नमेंट इज मेड हियर. दैट इज व्हाई. I hope it is clear now. मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया. That is the idea of collective responsibility. ये टर्म याद रखिएगा. To the house of people. And all the collective मतलब all the ministers and the cabinet council of ministers and prime minister together. ठीक है, तो ये मैंने आपको बता भी दिया. So currently the NDA is having 293 seats, but BJP is having 240 seats, and it requires 272 to form the government. So अकेले तो नहीं, alone they cannot form the government, but with the help of their allied partners, these are the allied partners, they can form the government. ठीक है, I hope it is clear. Okay, है ना? And these are the opposition, है ना? India Alliance 238 seats and all. Now let's move on to the next one. अब देखो गौर से देखना. The ministers individually shall hold office during the pleasure of President, Prime Minister, Lok Sabha, Supreme Court. What is the right answer? Guys, these are very high quality, top standard questions. I have taken it from the Constitution itself, and the reason is so these questions actually help clear your concept. आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा. दैट इज द आइडिया अबाउट इट. सिर्फ रट नहीं ले रहा है. ऐसा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज सो, है ना. द मिनिस्टर्स इंडिविजुअली शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट. अभी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं हो रही है, इंडिविजुअली. ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई एम सेइंग, इसलिए मैंने ब्रैकेट में इंडिविजुअली लिख दिया, ऑल्दो इंडिविजुअली कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड नहीं मेंशन्ड है. यस, द राइट आंसर इज ए. प्रियंशी गोयल, नताशा, तेजस्वी ठाकुर, यू ऑल राइट. यस, ए इज द राइट आंसर. अब देखो, अगर आप देखोगे आर्टिकल 75 क्लॉज 2 देखो, द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. यहाँ पे इंडिविजुअली नहीं लिखा है, बट इट इज सेइंग सो. उसका मतलब वही हुआ. क्या मतलब हुआ? प्लेजर. अच्छा, प्लेजर का मतलब क्या होता है? प्लेजर का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट को अगर अच्छा नहीं लगेगा, पसंद नहीं आएगा, सो ही कैन रिमूव, ही और शी कैन रिमूव. ओके, लेकिन अब देखो, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मिनिस्टर है. कभी ऐसा होता है ना कि कोई मिनिस्टर है, लेट्स से आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, कोई भी मिनिस्टर, लेट्स से मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट, आई डोंट नो हु इज, बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. एंड इफ द प्राइम मिनिस्टर वांट्स दैट ही शुड रिजाइन और ही शुड बी रिमूव्ड, देन द प्राइम मिनिस्टर विल से टू द प्रेसिडेंट दैट प्लीज रिमूव दिस पर्सन. ठीक है, सो द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड, बट वही बात है, डिसीजन इज टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर, बट ऑल द थिंग्स ऑन लेटर और ऑन पेपर इज डन बाय द प्रेसिडेंट. तो सारे मंत्री जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे होते हैं. दैट्स कॉल्ड एज प्लेजर डॉक्ट्राइन. इस पर बहुत सारे केसेस भी हुए. वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल दैट वेदर इट इज ट्रू और नॉट, वेदर इट इज दैट. ठीक है, बट आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एक्चुअली ऑल द मिनिस्टर्स आर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट एंड दे कैन बी रिमूव्ड एनी टाइम, ऑफ कोर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन and let me see how many of you can answer. Please read, think and answer.
द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, ऑल द मिनिस्टर्स, जितने भी तरह के मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर मिनिस्टर, स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, डेप्यूटी मिनिस्टर्स, है ना, इवन सम केसेस पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, तो जितने भी टोटल मंत्री हैं वो इस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते नंबर्स को. व्हाट इज दैट? टोटल नंबर्स. व्हाट शुड बी द आंसर? देखो, वट एवर यू आर कॉन्फिडेंट प्लीज राइट दैट. ठीक है. I'm very sorry, I haven't got the right answer yet. किसी ने लिखा था, उसने डिलीट कर दिया, thinking that he was wrong, he or she was wrong. I haven't got the right answer. Option A is the wrong answer. Yes, Kush Agran, now you are right. So this is 15% of the Lok Sabha, House of People, यानी लोक सभा. मतलब टोटल मिनिस्टर्स कितने हो सकते हैं यूनियन कैबिनेट में, यूनियन मिनिस्ट्री में. ठीक है. तो देखो यहाँ लिखा हुआ, मतलब बताते हैं 15% ऑफ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, यानी टोटल लोकसभा एमपीज, लोकसभा नॉट टोटल, लोकसभा एंड राज्यसभा टुगेदर. तो लोकसभा मतलब 543 का 15%. So if you calculate it 15 by 100 into 543, so it will come out to be 81.45. तो पॉइंट में तो होता नहीं है आदमी. सो 81 से ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते सेंट्रल गवर्नमेंट में. सो दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है. ओके, इज इट क्लियर? सो टोटल जितने भी मिनिस्टर्स हैं, सो 81 मींस प्राइम मिनिस्टर प्लस द टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सब मिला के. It should not cross that even numbers. Is it clear? 81 से ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते. I hope it is clear. So, 15% of लोक सभा MPs. ऐसा नहीं कि लोकसभा राज्यसभा दोनों जोड़ के, नहीं. A is not the correct answer. Okay? सिर्फ इसका 15% निकालना होता है. राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं? 245 मेंबर्स are there, but they are not calculated while calculating 15%. Because Article 75 में जो लिखा है वही ना पढ़ेंगे. So they have written, है ना, the total ministers including the prime minister in the council of ministers shall not exceed 15% of the house of people, यानी लोक सभा का. ठीक है. Okay, that is what you should be doing. Now let's move on to the next one. ये ओरिजिनली नहीं मेंशन था, अगर आप गौर से देखोगे, देखो 1 कैपिटल ए है, यानी बाद में इंसर्ट किया गया, इंसर्टेड लेटर ऑन. यानी ओरिजिनली कोई अपर लिमिट नहीं थी, जितने चाहे मंत्री बना दो, बट लेटर ऑन दिस लिमिट वाज पुट बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ये जो लाइन है इसको ऐड किया गया, was inserted in Article 75 by which constitutional amendment? 61st, 91st, 93rd, 69th. What is the right answer? So people have confusion between 91 and 93. Anyone else? किसी की कुछ और राय भी है? So basically the right answer is 91st amendment. देख सकते हो, है ना, 75 1A में देखोगे 91st amendment added this, ठीक है, in 2003. Okay, so that is what you should be knowing. So the right answer here is B. ठीक है. So Natasha and Priyanshi Goel, you both were right. Okay. Now the next one is a minister who for any period of dash consecutive month is not a member of either house of the parliament shall at the expiration of that period cease to be a minister. तो आप घबराइए मत, अब मैं सारे मिनिस्टर्स का भी नाम डिस्कस कराऊंगा. I will discuss the name of each and every ministers. The important ones explain I will. ठीक है. So मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे रहा हूं आपका. First I will clear the concept around it, then I will explain. ठीक है. मतलब क्या है, देखो, if you want to be a minister, मतलब देखो पहले ही कॉन्सेप्ट होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, है ना. सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सारे मिनिस्टर्स आते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो अ मिनिस्टर, है ना. इन लोगों को दे बोथ शुड बी आइदर अ लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ राज्यसभा. अगर राज्यसभा के एमपी तो भी चलेगा. हालांकि ऑल्दो द गवर्नमेंट नीड्स मेजॉरिटी ओनली इन लोकसभा, सिर्फ यहां मेजॉरिटी चाहिए गवर्नमेंट को,
the ruling party should have majority only in Lok Sabha to form the government. But in case of ministers appointment, the ministers can come from Lok Sabha as well as from Raj Sabha. So like Mr. Manmohan Singh, he himself was the prime minister and he was not a Lok Sabha MP. He was a Raj Sabha member of parliament elected from Assam. Okay? But there is one exception that for 6 months, a person can become a minister or a prime minister without being an MP, without being a Lok Sabha MP or a Raj Sabha MP. So the right answer is B. Yes, Kushagra Saxena, Priyanshi Goyal and Natasha, you are right. यानी आप 6 महीने तक मंत्री बन सकते हो केंद्र सरकार में. सेम इज द केस विद स्टेट गवर्नमेंट. तो केंद्र सरकार राज्य सरकार में 6 महीना तक मिनिस्टर बन सकते हो बिना लोकसभा एमपी या राज्यसभा एमपी बने, और सिमिलरली बिना एमएलए या एमएलसी बने स्टेट में. But within 6 months, you have to fight the election, either a Lok Sabha election or a Raj Sabha election, and win the election, and then you can continue after that. ठीक है, तो 6 महीना तक चलेगा, and that is what is written also in 75. Yes, a minister who for a period of any 6 consecutive months is not a member of either house of the parliament shall at the expiration of that period cease to be a minister. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. आई होप इट इज क्लियर. मतलब अगर 6 महीना के अंदर अंदर वो मंत्री एमपी नहीं बना, चाहे लोकसभा या राज्यसभा मंत्री एमपी नहीं बना, तो उसकी सीट चली जाएगी. cease to be a minister means he will stop being a minister. I hope it is clear. And now there's an article on the size of council of ministers. 16 June को article आई थी after the ministers were formed last year, है ना. So the new government and all Lok Sabha elections and all. So that is what they had talked. है ना, 9 June को, है ना, oath taking हुआ था. So the council of ministers इस बार कहते हैं prime minister is there. So 30 cabinet ministers, 5 minister of states, 5 minister of states, है ना, and 36 minister of state with independent charge. So 36 plus 30 plus 5 plus 1 कितना हुआ? You know, तो 66, 71 and 72. Total 72 ministers. है ना, total 72 council of ministers. Is it clear? 1 खुद prime minister हुए. यहाँ 30 cabinet minister, 5 minister of state and 36 minister of state. 5 minister of state with independent charge और 36 minister of state. तो हो गया 36, 66, 71, 72 total. और मैक्सिमम अभी मैंने बताया कितना बन सकते हैं, 81 बना सकते हैं. सो दे कैन मेक 81, 15% ऑफ टोटल लोकसभा सीट्स. ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए. सो दे आर एक्चुअली लेस देन दैट, है ना. 81 से कम है, 72 मिनिस्टर्स आर देयर. आई होप इट इज क्लियर. नाउ यू विल बी आस्किंग सर ये कैबिनेट मिनिस्टर है, एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज है, इंडिपेंडेंट चार्ज ये क्या होता है? सो दैट आई विल डिस्कस, बट बिफोर दैट हियर इज अ क्वेश्चन. Which of the following types of ministers are there in practice? Generally, I mean, this is a convention from British, because we have taken the parliamentary form of government from Britain. So that is what you should be knowing. एक्चुअली जिन्होंने बी किया है तो ठीक है, यू आर आल्सो राइट, बट एक्चुअली क्या है कि जनरली जो होता है ना, सी इंडिया में कैबिनेट मिनिस्टर भी होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, डेप्यूटी मिनिस्टर भी होता है. ऑल दो फॉर द पास्ट आई थिंक 30-40 इयर्स वी हैव नॉट सीन दिस. ठीक है, लेकिन है ये भी अलाउड. इवन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होता है, बट इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट है, सो आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल. तो देखो मंत्री जो होते हैं ये सब मिला करके, ये प्लस प्राइम मिनिस्टर, दीज आर इक्विवेलेंटली कॉल्ड एज COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. समझ में आया? जब लिखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर्टिकल 75, इट इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, तो सबसे सीनियर मोस्ट जो होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं. प्राइम मिनिस्टर तो है ही, उसके बाद सबसे सीनियर मोस्ट इज कैबिनेट मिनिस्टर. ठीक है, उसके बाद जो सेकंड में होते हैं उनको MOSIC लिखते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज. ओके, देखो ये लिख रहे हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट. अब आप सोच रहे हो जैसे स्टेट देखोगे तो आप सोच रहे हो यू आर टॉकिंग अबाउट, अच्छा स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट, राज्य वाला. नो, स्टेट का मतलब हुकूमत भी होता है, गवर्नमेंट के सेंस में भी होता है. सो हियर व्हेन वी आर सेइंग स्टेट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोविंस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर होते हैं. यू हैव टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर. देन वी हैव मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड देन वी हैव अ डेप्यूटी मिनिस्टर. क्योंकि डेप्यूटी मिनिस्टर आजकल नहीं बन रहे कोई, बट दैट इज हाउ इट इज. ठीक है, तो आप देख सकते हो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये मिस कर गया, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स.
and this is not written in the constitution. ये क्लासिफिकेशन मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं. दिस इज जस्ट अ ब्रिटिश प्रैक्टिस. वी हैव टेकन इट फ्रॉम एज अ कन्वेंशन. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर. नहीं है तो मैं फिर से क्लियर कर देता हूं. प्राइम मिनिस्टर इज देयर. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंप्राइजेस ऑफ सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, फिर उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर्स. सो रैंक वाइज लिख रहे हैं. सबसे इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट रैंक कैबिनेट मिनिस्टर्स का होता है प्राइम मिनिस्टर के बाद. फिर होता है पूरा मैं लिख रहा हूं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज. इसका मैं मतलब बताऊंगा व्हाट इज इंडिपेंडेंट चार्ज, व्हाट डज इट मीन. देन उसके बाद होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट. ठीक है. देन उसके बाद होता है डेप्यूटी मिनिस्टर. ठीक है. बट डेप्यूटी मिनिस्टर इज नॉट देयर, सो आप स्किप कर सकते हो, बट यू शुड नो इट that deputy minister is also there. It can be there. Earlier hua karta tha, but now we do not have this concept. So currently we are having this only. Okay. Okay. Now the first COM, matlab Council of Ministers, this is Prime Minister and other ministers aate hain. At the time of independence had only dash ministers headed by Prime Minister Nehru. कितने होते थे? 15, 20, 25, 7. What is the right answer? Yes, Priyanshi Goyal and Kushagra Saxena both right. 15 ministers होते थे, है ना? And only 15 ministers headed by Prime Minister. है ना? फिर 1952 इलेक्शंस हुआ, तब बढ़ के 30 हुआ, एटसेट्रा एंड ऑल. ठीक है. फिर 91st अमेंडमेंट में दिस लिमिट वाज इम्पोज्ड. ठीक है. और मिनिमम कोई लिमिट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट में, बट स्टेट गवर्नमेंट में मिनिमम 12 मिनिस्टर्स होने चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए ना. सो दैट इज व्हाट यू शुड नो. और कुछ स्टेट्स में मैक्सिमम लिमिट जैसे 15 का है ना लिमिट, कि दे शुड नॉट बी मोर देन 15. बट दिल्ली यूनियन टेरिटरी का इलेक्शन होता है, या जम्मू एंड कश्मीर का होता है, सो दैट लिमिट इज 10%. मतलब दिल्ली में हाउ मेनी एमएलएस आर देयर? टोटल 70. So if the government is formed, the ministers can be at max how much? 70 by 10. सिर्फ 7 ministers हो सकते हैं, including chief minister. मतलब CM plus 6 ministers can at max be there. Why I'm telling? Because tomorrow there is oath taking. तो दिल्ली में 70 सीट्स होती है, तो उसका 10% सिर्फ 7 होगा, तो सिर्फ 7 मंत्री हो सकते हैं दिल्ली में. ठीक है. जनरली 15% लिमिट होता है, बट दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी, तो इसीलिए. और जम्मू कश्मीर में 10% का लिमिट है. Otherwise, generally states में in states or at the center level, we are having 15% limit of the lower house, or the Lok Sabha in case of parliament and legislative assembly in case of, है ना, देखो लिखा ना, लोक सभा का 15% या legislative assembly का 15% in case of a state. Is it clear? Hopefully. और कल दिल्ली के इलेक्शन तो आप देखना, जब when ministers are appointed, there will be at max 7 ministers, including the chief minister. Means 1 chief minister and maximum 6 ministers can be there. ठीक है, maximum बता रहे हैं, so 7 लोग हो सकते हैं. Okay, so let us talk about prominent ministers' name. So first we will be talking about Prime Minister. So first let's talk about Prime Minister. मैंने बताया था ना कि कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन लोग होते हैं. First is Prime Minister. The second is the Cabinet Minister. है ना? I am writing it clearly so that you can understand. The third is Minister of State. And when state is written here, do not get confused with the province. ये state मतलब हुकूमत के सेंस में, गवर्नमेंट के सेंस में. Minister of State Independent Charge. ठीक है. And the fourth one is Minister of State. ठीक है. ये 4 अभी फिलहाल है. Fifth भी होते हैं, Deputy Ministers are also there, but currently we do not have, so I'm skipping that. चलो, तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं. सो प्राइम मिनिस्टर है ना. अच्छा, पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. आई विल आस्क सम क्वेश्चंस एंड देन आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी मिनिस्टर्स. सो इज द फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस? बिकॉज़ कुछ तो आपको भी आना चाहिए ना, सम ऑफ देम. प्लीज कीप ऑन आंसरिंग मी फास्ट. बताइए, व्हाट इज द आंसर? Yes, the right answer is B. Very good, very good. Tejasvi, Priyanshi, Kushagra, you are right. Who is the Minister of Cooperation? Minister of Cooperation.
I had deliberately given it. Who is the Minister of Home Affairs? Now please answer this. कोऑपरेटिव सुने, कोऑपरेटिव अभी इस बार बनाया गया, पहले नहीं होते थे. यस, so the right answer is option A. He is also Minister of Cooperation. ठीक है. Yes. So he is having cooperatives का आपने नाम सुना होगा, I'm sure. Cooperatives, cooperative societies etc. तो उसके लिए एक नया मिनिस्ट्री बनाया गया, recent years में बनाया गया Ministry of Cooperation. And that is why I had given, because I know that Minister of Home Affairs everyone can answer. Yes, A is the right answer now. Who is the Minister of Health and Family Welfare? ये previous year question है CLAT 2021 का, but at that time the answer was something else. 2024 में we had seen new Minister of Health and Family Welfare. What is the answer? Yes, Tejasvi Thakur, you are right. D is the right answer. Yes, Priyanshi Goyal. ये मानसुख मांडविया पहले थे before 2024 election. ठीक है. So Minister of Health and Family Welfare and Minister of Chemical Fertilizer. So D is the right answer. Yes, Natasha, you are right. हाँ, previously मानसुख मांडविया was there. तो ये जब क्वेश्चन आया था ना, ये CLAT 2021 में, so just before that Harshvardhan was the prime minister, the health minister in COVID second wave. जैसे second wave end हुआ, we have seen ministers being changed and Mansukh Mandaviya became the health minister. और जैसे ही change हो उसके just बाद exam में question आ गया. Just later than after the ministers got changed, the question came, and they gave both the option to confuse that because recently the ministers were changed and maybe many people would have marked option B, but by that time it was changed, so the answer is A. ठीक है. Who is the Minister of Road Transport Highway? Very easy. Transport and Highway. Because he remains in news, so I hope you are aware. ये तो पता होगा, कई बार न्यूज में इनका नाम आता है. Yes, कोषाग्रा सक्सेना, प्रियंशी गोयल, you are right. तेजस्वी ठाकुर, right. Shri Nitin Gadkari ji actually is the right answer. है ना. The next is who is the Minister of Jal Shakti? ये भी बहुत न्यूज में आता है. ये नाम जल शक्ति मिनिस्ट्री बहुत न्यूज में आती है बिकॉज स्वच्छ भारत मिशन है ना, रूरल इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय दिस मिनिस्ट्री है ना. जल शक्ति वाटर रिसोर्स एंड ऑल, इस पर भी एक पीवाईक्यू आया है इन सम डिफरेंट फॉर्मेट. आई विल शो यू. यस, द राइट, वेरी गुड प्रियंशी गोयल. द राइट आंसर इज सीआर पाटिल. ए इज द राइट आंसर. ही इज नाउ हैविंग जल शक्ति मिनिस्ट्री. ए इज द राइट आंसर. ठीक है. Yes, Natasha, you are right. तो ये क्वेश्चन आया था. Ministry of Jal Shakti was formed by merging Ministry of Drinking Water and Sanitation and Ministry of what? Yes, Priyanshi Goel, right. हाँ, ये दोनों को मिनिस्ट्री. अब क्या हो गया ना, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन, नॉट दिस इज अ डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, उसी के अंदर में, इस मिनिस्ट्री के अंदर में, बिकॉज वी हैव डिपार्टमेंट्स इनसाइड द मिनिस्ट्री और अंडर द मिनिस्ट्री. ओके, द नेक्स्ट इज हु इज द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? वेरी इजी क्वेश्चन. और हु इज द फॉरेन मिनिस्टर? इसीलिए मैंने पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया मिनिस्ट्रीज का, मिनिस्टर से रिलेटेड, देन आई एम डिस्कसिंग दिस. मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. Yes, I think it's easy. Mr. S. Jaishankar, ये foreign minister भी लिखते हैं. ठीक है. So yes, everyone knows. I mean, I don't need to explain. Yes, D is the right answer. अच्छा, ये जो है ना, ये foreign secretary है. Foreign minister is a political post. Foreign secretary is a bureaucratic posting. So he's actually IFS, Indian Foreign Service Officer. And Dr. S. Jaishankar is he had earlier served. Yes, ex foreign secretary also. पहले foreign secretary भी रह चुके थे. But now he's the foreign minister of India. Now please answer me this. इनके पास तीन मिनिस्ट्री है. मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीटी है ना. और ये वाली इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सिनेमा वगैरह से रिलेटेड है ना, जितने भी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, टीवी न्यूज एक्सेट्रा. रेलवे तो एवरीवन नोज. Yes, Kushagra, very good. As Mr. S. Jaishankar was foreign secretary under when Sushma Swaraj was the Srimati Sushma Swaraj was the foreign minister, right? So here the right answer is Ashwini Vaishnav. Mr. Ashwini Vaishnav, B is the right answer. Very good. People have answered. Great. है ना. So ये सब मिनिस्ट्री इनके पास है.
जनरली वी हैव सीन, अगर आप देखोगे इनके पास अक्सर ना 2-3 मिनिस्ट्री रहती है, अकेली एक नहीं रहती है. He is having multiple ministries in the last 4, 5, 6 years we have seen, है ना. Okay, here's the next one. Who is the Minister of Women Child Development? ये भी important है, because जितना स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, है ना, and there are many schemes of related with women empowerment, gender equality, etc., which is being implemented by Ministry of Women Child Development. So is the minister? Yes, Ashnur Kaur Tejasvi Priyanshi Goyal, you are right. Annapurna Devi is the right answer, and she is the chairperson of National Commission for Women. Enough chairperson. Yes, right answer is B. No. The next, Hannah. The next is, who is the Minister of Culture? So the Minister of Culture is Gajendra Singh, Mr. Gajendra Singh Shekhawat. So B is the right answer. Minister of Culture, Minister of Tourism. ये दोनों बहुत सिमिलर भी होता है, काम भी सेम होता है, मतलब सेम टाइप का होता है ना, कल्चर और टूरिज्म एक दूसरे से लिंक्ड भी है ना. Yes, Natasha, you are right. Priyanshi Goyal, you are right. Who is the Minister of Textile? Kapda se related. Now this is important because it is quite a labor-intensive sector, है ना. So promoting this ministry or promoting this sector is very important for to ensure that there should not be jobless growth, there should be job creation, है ना. Minister of Textile कौन है? अच्छा ये मैंने ऑप्शन ही में नहीं लिखा, I'm very sorry. So none of the above. So the right answer actually is Shri Giriraj Singh is the Minister of Textile. Okay, now let's talk about detailed description. वही मैंने बताया कि when we are talking about ministers, first when I'm saying Council of Ministers, the first is Prime Minister, the second is Cabinet Ministers. We will discuss. Then we will discuss MOS. मैंने बता दिया Minister of State Independent Charge. Then we will discuss Minister of State. So सबसे पहले ये discuss करते हैं Prime Minister. So he is having Ministry of Personnel, Public Grievance and Pensions. Now I am giving little idea. इसके अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, उसको कहते हैं DOPT, Department of Personnel and Training. नाम सुना है? और जितने IAS IPS होते हैं सब इसी के अंडर में आते हैं, especially IAS officers, the bureaucrats, all are actually their Department of Personnel and Training. डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसके अंदर आपने नाम सुना होगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एक्सेट्रा. तो ये दोनों डिपार्टमेंट है जो किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं है. दीज टू डिपार्टमेंट्स आर नॉट अंडर एनी मिनिस्ट्री. तो जितने भी एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, आपने सुना होगा न्यूक्लियर रिएक्टर्स, all are actually under Department of Atomic Energy, which is not under any ministry, directly under Prime Minister's office. The Department of Space, नाम सुना होगा ISRO, I am sure 100%, that is also directly under Prime Minister. उसके बाद चौथा क्या लिखा है? All important issues, all other portfolios not allocated to any minister. मतलब क्या है? कोई भी मिनिस्टर, अगर कोई और चीज है जो कोई और मिनिस्टर उसके लिए नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट इट विल गो टू द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, कोई भी ऐसी चीज होती है. दैट इज व्हाई द प्राइम मिनिस्टर हैज अ ग्रेट रोल एज कंपेयर्ड टू अदर मिनिस्टर्स, बिकॉज कोई मिनिस्टर से नहीं हो रहा है, ये कोई ऐसी चीज जो किसी के डोमेन में नहीं फॉल करती है, सो ऑटोमेटिकली इट विल गो टू द प्राइम मिनिस्टर. Now we are talking about the second one, and that is cabinet ministers. Cabinet ministers को portfolio मिलता है, they get portfolio, means ministry मिलती है कि आपको ये वाली मिनिस्ट्री है, इसके अंडर में काम करना है. ठीक है. So for example, Minister of Defense is Mr. Rajnath Singh. Home Ministry and Corporation Ministry, Mr. Amit Shah, है ना. Mr. Nitin Gadkari, Road Transport. Mr. JP Nadda, Health and Family Welfare, Chemical and Fertilizer. Mr. Shivraj Singh Chauhan, Agriculture Ministry and Rural Development. Srimati Nirmala Sitharaman, Finance Ministry and Corporate Affairs. ठीक है. Then we have S. Jaishankar, Mr. S. Jaishankar, External Affairs Ministry. Mr. Manohar Lal Khattar, Housing and Urban Affairs, Ministry of Power. Mr. Piyush Goyal, so Ministry of Commerce and Industry. Mr. SD Kumaraswamy, Ministry of Heavy Industries, Steel. ये important है. Education Ministry, Mr. Dharmendra Pradhan. Shri Jitaram Manji, Minister MSME. ठीक है, Minister. Then Shri Sarbanan Sonowal from the state of Assam, Ministry of Ports, Shipping, Waterways. Then Shri Rajiv Ranjan Singh, Ministry of Panchayati Raj, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. ये सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स पढ़ रहा हूँ. ठीक है. So then you can see civil aviation important है, हवाई जहाज मंत्रालय, Mr. KR Naidu, ये important है ना, याद रख लीजिएगा. Then ये मैंने डिस्कस कर लिया, this also we have discussed. Okay. Then also आप देख सकते हो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, ये सब होता है फिजिकली डिसेबल्ड को प्रमोट करने के लिए, ओल्ड पीपल के लिए. So there is social justice ministry. So Dr. Veer Kumar is there, है ना.
and rest you can see है ना, Ministry of New Renewable Energy, Consumer Affairs. फिर these are the things, Ministry of Communication, ये donor ministry. देखो नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए there is a separate ministry, donor ministry. So Mr. ज्योतिरादित्य सिंधिया. फिर environment ministry, very important, भूपेंद्र यादव. ठीक है. So culture and tourism we have discussed, women child development we have discussed, petroleum and natural gas, Mr. Hardeep Singh Puri, Mr. Kiren Rijiju, minority affairs and unparliamentary affairs. ठीक है. Mansukh Mandavia, earlier health minister, now he is having labor ministry and sports ministry. ठीक है. Mr. G Kishan Reddy is having coal ministry and ministry of mines. है ना. Mr. चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री एंड सीआर पाटिल जल शक्ति मिनिस्ट्री. यहां तक हम लोगों ने सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स डिस्कस किए. सो हु गेट कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स एंड दे गेट पोर्टफोलियोज. ठीक है. इसके बाद जो आते हैं, आई हैव डिस्कस प्राइम मिनिस्टर, वी हैव डिस्कस कैबिनेट मिनिस्टर्स सारे. इसके बाद आते हैं जो इससे जूनियर होते हैं, सो दे आर जूनियर टू कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड स्टिल दे आल्सो गेट पोर्टफोलियो. उनको कहते हैं हम लोग मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज. इंडिपेंडेंट चार्ज मतलब दे आर आल्सो गेटिंग अ सेपरेट मिनिस्ट्री, but they are not under cabinet minister. They are junior, rank में junior होते हैं, but they are not under them. मतलब मैं बताता हूँ इसका मतलब. For example, we are having these 5 ministers. जैसे law and justice, Mr. Arjun Ram Meghwal. So he do not have cabinet minister rank. ये सबको कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक नहीं मिलती, मिनिस्टर ऑफ स्टेट की रैंक मिलती है, लेकिन इनके ऊपर कोई मिनिस्टर नहीं होते. मतलब ऐसा नहीं होता कि, समझिए, यू गॉट इट. सो जैसे कैबिनेट में अगर जैसे लॉ मिनिस्ट्री है, जनरली क्या होता है, लॉ मिनिस्ट्री में कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे. लेकिन यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है, इसका मतलब है कि कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होंगे. यू गॉट इट. So when there is minister of state independent charge, it means in this ministry there will be no cabinet minister, but they have a rank. These people have a rank of minister of state. ठीक है. जैसे मिनिस्ट्री ऑफ मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. तो हम लोगों ने कैबिनेट मिनिस्टर में कोई भी मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस नहीं दिखा होगा यहाँ पे. Why? Because these are ministers independent charge. मतलब होता है कि they are minister, they are having enjoying ministry of state rank. Minister of state rank means they are below cabinet minister in rank, but there is no cabinet minister in these ministries. ये सब मिनिस्ट्री में कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होते. This is called as minister of state independent charge. ठीक है. ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है ना. ये आयुष मिनिस्ट्री. सो आयुष मिनिस्ट्री में भी also there is no cabinet minister, there is only minister of state, and that is why we write minister of state independent charge. ठीक है. law and justice very very important. So there is no cabinet minister in law and justice currently. पहले हुआ करते थे, earlier we had, but currently we have only minister of state independent charge. ठीक है. अब होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट. यहाँ पे इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं लिखा है, इसका मतलब दे आर मिनिस्टर ऑफ स्टेट रैंक, but their ministry they are under cabinet minister. It means there is some cabinet ministers in this ministry. For example, मान लो कोई है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, इसके कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं. कौन है? Who is the cabinet minister? मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान. ठीक है. So that is why we are writing minister of state. And the second rank, so Shri Jayant Chaudhary is minister of state in education ministry also, in a second rank minister. Is it clear? You got the confusion? You got this clear? जैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. क्यों? इसलिए कि इसकी इस मिनिस्ट्री में, इन द सेम मिनिस्ट्री वी आर हैविंग कैबिनेट मिनिस्टर आल्सो. सो दैट इज व्हाई यहाँ पे लिखा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट. और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज लिखा है, तो उसकी मिनिस्ट्री में कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होगा. यही खुद सबसे सीनियर है. दे आर द सीनियर मोस्ट, बट स्टिल दे आर नॉट कैबिनेट मिनिस्टर्स. उनको रैंक मिनिस्टर ऑफ स्टेट का ही मिला. Is it clear? They have got the minister of state rank, but they are the senior most. There is no cabinet ministers in these ministry. That is why we write minister of state independent charge. Is this concept clear? तो जैसे अब ये हो गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, यही है 5 लोग. ठीक है. Now we are talking about minister of state. It means in these ministries there are cabinet ministers. इनके ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर, जैसे ये है, इनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, है ना. हेल्थ मिनिस्ट्री, we have JP Nadda, Mr. JP Nadda as the health minister, as a cabinet minister. So he is the second junior minister. जूनियर मिनिस्टर वर्ड भी लिखते हैं, बट मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज रेड. जैसे कॉमर्स मिनिस्टर, वी आर हैविंग वेयर कॉमर्स मिनिस्टर ऑलरेडी कैबिनेट में. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज धर्मेंद्र प्रधान, इज द कैबिनेट मिनिस्टर एंड इज द सेकंड मिनिस्टर देयर. तो ये को समझना जरूरी है. तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ना, इसमें ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, यानी सेकंड मिनिस्टर है, जूनियर मिनिस्टर. एंड इट इज नॉट रिटन मिनिस्टर MOC IC because we are already having a cabinet minister in finance ministry, and that is Mr. Srimati Nirmala Sitharaman.
ठीक है, तो ये आपको समझना है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन में आप देखोगे कैबिनेट मिनिस्टर इज मिस्टर मिश्रा, तो ये आपको समझना जरूरी है। दैट इज व्हाट होम मिनिस्ट्री में भी ये नित्यानंद राय इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ कैबिनेट मिनिस्टर एंड हु इज द कैबिनेट मिनिस्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिस्टर मिश्रा। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए। दैट इज व्हाट वी आर हाईलाइटिंग। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख सकते हो। सो दीज आर एमओएस, सो दीज आर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, सो आई एम जस्ट हाईलाइटिंग इट। यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड एंड वॉच इट। So I hope I have tried my best to explain. है ना, जैसे यहाँ youth affairs and sports, and she is minister of state. It means there is some cabinet minister also, and yes, Mr. Mansukh Mandavia is having Ministry of Youth Affairs and Sports as a cabinet minister. ठीक है, तो ये सबको पता होना चाहिए। All of them की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो कैबिनेट मिनिस्टर्स में जो प्रोमिनेंट कैबिनेट मिनिस्टर जो मैंने हाईलाइट करा है वो याद होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। और एमओसी आईसी में जो ये वाला है ना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, इसमें मैं बताता हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज लॉ आप लोग से रिलेटेड है और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स याद रखिए जरूरत नहीं, बट यू शुड नो द कॉन्सेप्ट। ठीक है, दिस यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर एज सच, बट ये वाला ये दोनों याद रखिएगा। एंड कैबिनेट है मैंने जो हाईलाइट करा है, जैसे दिस यू शुड नो। ठीक है ना, ये नो, दिस यू शुड नो, दिस यू शुड नो, दिस यू शुड रिमेंबर, दिस यू शुड रिमेंबर, दिस यू शुड रिमेंबर। ठीक है, देन इसमें ये आपको याद होना चाहिए, दिस यू शुड रिमेंबर, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और बाकी में देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करते रहो, है ना। इसमें जो है देन दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ठीक है, दैट इज व्हाट। अगर सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स याद हो जाए वेरी गुड, बट द प्रोमिनेंट वंस यू शुड रिमेंबर, है ना, जो न्यूज में अक्सर रहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है समटाइम्स। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स आर जनरली मोर इंपॉर्टेंट, जैसे जल शक्ति, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज में ये दोनों नाम याद रखना। एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स जो है, दिस यू कैन फॉरगेट, इफ इवन इफ यू डू नॉट रिमेंबर, दे विल नॉट बी आस्क्ड। जनरली वो कैबिनेट मिनिस्टर्स ही पूछते हैं एग्जाम में। सो वी हैव सीन इन द एग्जाम जनरली दे आर आस्किंग दिस, है ना, कैबिनेट मिनिस्टर, ये वाला पूछते हैं जनरली। ठीक है, बट आई हैव एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट, आई होप इट इज क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। Thank you everyone. Please press the like button, share this video and subscribe to our channel. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.